स्टूडेंट्स, चलो जल्दी से आ जाओ सब लोग. यस, कम फास्ट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ practice session of investment chapter. So we already completed beta investment chapter theory of investment in debentures and investment in equity shares. Before starting any session, first we will quickly revise our basic rules of accounts. So our basic rules of accounts are divided in two parts: traditional approach, modern approach. So traditional approach talks about personal real nominal account. Personal account, debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver, debtor becomes giver and creditor becomes receiver. Real account, debit what comes in, credit what goes out, and nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Modern approach talks about asset debit balance, liability credit balance, expenses debit, income credit, and capital credit balance. So these are basic rules of accounts. We have till today we have completed bonus shares chapter, redemption of the preference shares, redemption of debentures, and this is the fourth chapter, which is the investment one. So we have almost finished our 25% of the syllabus. So here what we have seen till today is a bonus shares. Bonus shares, beta, there are two types of entries. Quickly revise all these entries, beta. Those who are started this revision with me, beta, please, if you understand this basic revision, then it means yes, you can, if you follow me properly from the very first day, you can understand all these entries. तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका मेरा स्पीड बहुत ज्यादा होगा, my speed will be little bit more, beta, but if you catch me, it means you are doing your revisions regularly, and if you don't catch me, it means, beta, you need lot of practice. So bonus shares में याद रखते हैं कि फर्स्ट वन इज अ पार्टली पेड बोनस शेयर्स एंड फुल्ली पेड बोनस शेयर्स. सो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स एंट्री, बेटा, कैपिटल रिडम्पशन, रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, general reserve account debit, P&L account debit to bonus to equity shareholders, and bonus to equity shareholders account debit to equity share capital. In case of partly paid bonus shares, beta, entry will be general reserve account debit, P&L account debit to bonus to equity shareholders, final call account debit to equity share capital, and then last entry will be bonus to equity shareholders ko final call, bonus to equity shareholder to final call. We are cancelling it. So remember, beta, balance sheet pro forma, equity and liability, shareholder fund, share capital, reserves and surplus, non-current liability, long-term borrowing, deferred tax liability, other long-term liability, long-term provisions. Then you have current liability, short-term borrowing, trade payable, other current liability, short-term provisions. Assets में non-current assets, property, plant and equipment, intangible assets, capital, WIP, intangible assets under development, non-current investment, deferred tax asset, long-term loans and advances, other non-current assets. Current asset में CIT, CSO, current investment, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent, short-term loans and advances, other current assets. So this is a balance sheet pro forma. If you remember, balance sheet pro forma is important for minimum 3 to 4 chapters, which are related to company accounts. In case of redemption of preference shares, your first entry will be preference share capital account debit, premium on redemption account debit to preference shareholders, preference shareholders account debit to bank, and premium will get cancelled with profit and loss account according to section 133 and accounting standards. Who wins? So accounting standard 130, accounting standard wins and not company law. So here entry will be profit and loss account debit to premium on redemption. After that, you have to maintain your capital structure by maintaining, better, in two ways. First one is a bank account debit to equity share capital to security premium, and second way is that CRR account, P&L oblique general reserve account debit to capital redemption reserve. After that, better, you have seen debentures का pro forma, redemption of debentures. You remember 10% of the debentures have to be, better, DRR में transfer करना पड़ेगा. So DRR में हम लोग क्या entry करते हैं? General reserve account debit. So there are allotment में, बेटा, 5 entries. In case of, बेटा, redemption there are 4 entries and own debentures 2 entries. So allotment के time पे every year you have to pass the entry profit and loss account debit oblique general reserve account debit to DRR. After that, better, DRR investment account debit to bank. Every year you are getting bank account debit to interest on investment. So bank account debit to, better, interest on DRR investment, which is transferred to that interest is transferred to, beta, P&L. So interest on DRR investment account debit to P&L. After that, 4 entries at the time of redemption. One entry I forgot. Debenture interest account debit to debenture holders and debenture holders account debit to bank. After that, रिडम्शन में, बेटा, 4 एंट्रीज होती है. डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. बट बिफोर दैट यू हैव टू सेल योर इन्वेस्टमेंट. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, रिडम्शन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एंड DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट may be losses or may be profit. So loss will be debited and profit will be credited. And in case of, beta, DRR account, you have to be now become free. So DRR account को हम लोग क्या करेंगे? Transfer to general reserve. And last one, beta, own debentures account debit to bank, and that own debentures are getting cancelled with debentures. So debentures account debit, P&L account debit to own debentures to profit on cancellation. So these are entries related to redemption of debentures. I hope you can recall all these entries. If you are not recalling it, it means you have to watch my Guru Mantra series. Guru Mantra series में जल्दी से ही आपके सामने मेरे तो चैनल पे आपको मिल ही जाएगा. If I say permits, तो मैं उसको हमारे वेब
वेबसाइट पे भी डाल दूंगा, हमारे आईसीआर नॉलेज पोर्टल पे, ऑल गुरु मंत्रा सीरीज इज ओनली फॉर योर बेनिफिट। सोने के पहले रोज आपको ये देखना है। तो ये थे हमारे अब तक के पूरी रिवीजन। यस बेटा, दिस इज ऑल अबाउट दैट 3 chapters, and then we started with investment account. So investment accounts are divided in 2 parts. One is a variable scrip and second one is a fixed bearing scrip. So variable bearing scrip means beta it is investment in shares, in which case you have to remember the pro forma. Pro forma is in you will prepare serial number, particulars, number of shares and rupees column. So serial number, particulars, number of shares, rupees column के बाद to balance brought down, to bank will be the additional shares, to bonus issue always write it in the number of shares column and don't write it in the beta rupees column, and last one will be to bank राइट शेयर्स जब आप लोग खरीदते हो। आफ्टर दैट बेटा यू आर गेटिंग डिविडेंड, दैट इज अ प्री एक्विजिशन डिविडेंड, यू विल क्रेडिट टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नाउ व्हाट इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड? फॉर दैट यू हैव टू वॉच माय प्रीवियस सेशन। सो बाय बैंक एंड व्हेन यू आर सेलिंग द शेयर्स, सो बाय बैंक अकाउंट and by loss and to profit will be the entry for working note will be there, and there is a concept which whenever there is a sale you will prepare working note. After that beta buy balance carried down. Put P&L account ka pro forma is very simple: buy dividend, then buy right shares which are renounced, and then buy profit on sale and to loss on sale, and to balance carried down will be the pro forma of P&L. And after that beta what is the last pro forma? Sale working note number 1, that is a profit on sale, serial number, particulars, computation, rupees, working note. इसमें Roman 1 आएगा sales value, Roman 2 will be the cost of sales, and Roman 3 will be profit oblique loss. After that beta debentures का pro forma, debentures में you will prepare date, particulars, then face value, interest, and then last one is the rupees column. So two balance brought down will be there, and if balance sheet debt is not equal to interest received debt, in that case you will prepare two interest receivable. Okay, after that two bank, A B C D का sequence, A will be the face value, B will be the interest column, C will be the inner side, and D will be the last column. And after that whenever you are selling your debentures beta, you will same sequence you are going to follow: buy bank, buy loss, and to profit. Remember here date wise sequence is very important, and hidden entries are interest receipt dates. Okay, interest receipt dates are hidden entries. So this is how you are going to solve investment के questions. Now this is what we have done till today. Within 7 minutes I revised everything. जिनको समझा वो समझा, नहीं समझा तो बेटा आपको रिवीजन बहुत करने की जरूरत है. So good morning to all of you once again. So ये था हमारा रिवीजन सेशन. कितने बच्चों ने बेटा मुझे मैच किया? जल्दी से बताओ मुझे. हाउ मेनी ऑफ यू कैन मैच माय स्पीड बेटा? जल्दी से बताओ इन कमेंट सेक्शन. तो टिल टुडे जो भी हुआ है वो हमने 7 मिनट में रिकॉल कर लिया. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पुनीत यादव, रितिका बेटा, नूर, गुड मॉर्निंग कांचन कुमारी, दीक्षा अग्रवाल जी, जिया पटेल, विकीसा, अमल, किरण शुक्ला, शिवांगी बेटा, गुड मॉर्निंग. चलिए, सो गुड मॉर्निंग सर. नितिन शुक्ला जी आ चुके हैं, अनिरुद्ध सोनी, रुशिता शर्मा, रेवती. Yes, sorry sir, I argued in the Telegram group without cross-checking. Sorry sir. Yes, but it's okay, no problem. Naresh ji, Tushal ji, Tanisha ji, Kirti, Mala Mullida, Swati, and Gokul ji. Good morning to all of you. बस इतने ही. चलो बाकी स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया के किधर किधर से हमारे प्यारे प्यारे दोस्त जल्दी से आ जाओ. चलो फास्ट. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. यस सर, एक्सेप्ट बैलेंस शीट स्पीड आई मैच विथ यू सर. भूमिका बोल रही है. वेरी गुड बेटा, गुड मॉर्निंग. खुशी जैन बोल रही है स्पीड मैच कर लिया सर. आर्या जी, ये स्पीड मैच किया क्या बेटा आपने? रिया सिंह, स्वाति, यस ऑलमोस्ट कैच युअर स्पीड. स्वाति बोल, दीक्षा बोल रही है. शिवराज, रुशिता ने बोला आई एम मैच विथ योर स्पीड, आई कैन मैच योर स्पीड. यस बेटा, विघ्नेश बोल रहा है. एंड दिबार्जुन गुड मॉर्निंग, सिर्फ गुड मॉर्निंग बोल के छोड़ दिया. यस, Navneet is saying, sir, I have to yes, revise again with your recorded lectures. एक ही बात बोलता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ. CA students, try to understand this. If you are not doing your revisions regularly, you are not going to survive in this CA market. If you are investing your 3 years, or at least I am saying ki 7 to 8 months in this course, those who are from direct entry beta, you are investing your 3 years of life in this CA course, and 3 years is not a beta small years beta, it's a big number of years that you are investing, and if you are not getting any return out of this, so beta it's of no use. And why you are not getting return out of this? Only reason is very simple: you are not doing your homeworks, your regular study. Yes beta, you are study regularly, and this is only the reason why you are getting fail. See beta, today also, today itself, I am telling you, all of these chartered accountants who are earning good income, they are giving their best. एटलीस्ट उन्होंने उनके पिछले लाइफ में बेटा जितना भी किया हुआ है ना, उन्होंने सब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके रखा हुआ है, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है.
ओके जो अच्छा कमा रहे, दे प्लान इट प्रॉपरली एंड नाउ दे आर गेटिंग रिटर्न्स, बट वो प्लान नहीं किया होता ना तो आज उनको इतना पैसा नहीं मिलता था। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका प्लानिंग बहुत जरूरी है। सिर्फ एक बिजनेस से नहीं, मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि मल्टीपल बिजनेस यदि आप करते हो या प्रॉपरली जहां पे दिमाग लगा के आप कुछ काम कर रहे हो, यू आर ऑल्सो डूइंग, यू आर फाइनेंशियल प्लानर्स ऑफ योर क्लाइंट्स एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ फाइनेंशियल प्लानर। सो बेटा हमारा प्लानिंग क्यों नहीं करेंगे? every time रे understand what I am telling you, that you have to maintain 100 pages notebook. Why you have to maintain that 100 pages notebook? It's only for your revision. और ये कंसिस्टेंसी नहीं है सर हमारे में, क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा हम लोग उतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, वी आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्टडी एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग इट कंसिस्टेंटली। पर हम लोगों ने जितना इंटरेस्ट क्रिएट करोगे बेटा, एक जगह पे बैठने की आदत लगाओ 2 आवर्स 3 आवर्स, यू वोंट अंडरस्टैंड कि टाइम कितना फास्ट चला जाता है। एंड बेटा व्हेन यू डू इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे till 6 months, then better you will get the result. नहीं तो क्या होगा? I am telling you, this is the 15 chapters are there in accounts, and similarly there are 4 subjects, and in second group that there are 4 subjects. It's not very easy, and what you studied on the first day you are going to forget it in the second day or third day, or बेटा after 10 days no one will remember that कि यार बोनस शेयर्स में क्या था, if you are not doing this revisions regularly। अभी इससे ज्यादा आपकी फैकल्टी क्या करेगी कि रोज आने के बाद 7 से 8 मिनट बेटा आपकी रिवीजन ले रहा हूं, आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, और फिर भी हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, कैसे चलेगा बेटा? इफ यू आर नॉट टेकिंग एफर्ट्स। और ये कोर्स कोई आसान कोर्स थोड़ी है, आसान नहीं बोल सकते, बट बेटा कंसिस्टेंट वर्क चाहिए। ये कोई हमारा इंजीनियरिंग का चलो एक बैकलॉग लग गया अगले साल में निकल गया, ऐसा तो नहीं होगा। डॉक्टरी में बेटा ऑलरेडी कुछ भी करके, ये प्राइवेट कोर्सेज के जैसा तो है नहीं, यहाँ पे ना कास्टिज्म चलेगा ना कुछ शेड्यूल के इसका नहीं रहेगा। ये कोर्स तो ऐसा है बेटा कि ये सिर्फ आपके 100% आपके एफर्ट्स के ऊपर आप पास होने वाले हो। कि ऐसा तो नहीं होगा कि चलो इंस्टीट्यूट को गुजराती मारवाड़ी लोग प्यारे उनको पास करो, नहीं दूसरे लोग नहीं प्यारे उनको फेल करो, ऐसा नहीं होगा ना भाई, नहीं होगा ये चीज। तो समझ लो आपको कितना पढ़ाई करना पड़ेगा। और जो बच्चे ये रेगुलरली रिवाइज नहीं करते हैं, तो आप ही सोचो, मैं सुबह 7 बजे नहीं उठ सकता हूं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई? कि मैं 4 दिन उठा, 5वें दिन पे मैं आलस कर रहा हूँ, लेजीनेस है, हो ही नहीं सकता। लेजीनेस चलेगा ही नहीं। हाँ बहुत बीमार होता, आई कैन टेल यू कि ठीक है छुट्टी लो। अभी यस्टरडे आई गॉट वन कॉल फ्रॉम माय फेस टू फेस बैच स्टूडेंट्स कि सर मेरे पापा का बर्थडे, आई हैव टू गो फॉर दैट, बारामती में मुझे जाना पड़ेगा। सो बेटा ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे आपको। मैं आपको सिर्फ मेरी रियल स्टोरी बता रहा हूं कि जब मेरी दादी, मतलब घर में मेरे मम्मी पापा उस टाइम पे बिहार में थे, और दादी हमारी, मतलब उनको आने को टाइम लगने वाला था, और दादी के साथ मैं अकेला था। 2 दिन मैंने छुट्टी लिया, तीसरे दिन पापा ने मुझे बोला कि क्लास को जाना है। ये कंसिस्टेंसी हमारे घर में पहले से था, इसीलिए हमारे घर में, और वो घर में माहौल था कि नहीं इसको सीए करवाना ही है करके। तो आपको ये माहौल चेंज करवाना पड़ेगा, इतना याद रखिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना। ये हर बार मैं रोज 5 मिनट का मोटिवेशन आपको देता रहता हूँ, बट बेटा इट्स ऑलवेज फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, इट्स नॉट ओनली फॉर माई सब्जेक्ट। यस चलिए, गुरु मंत्र सीरीज, यस बेटा सईद जी, यस थैंक यू। गुरु मंत्र सीरीज हेल्पिंग अ लॉट फॉर रिमेम्बरिंग, यस बेटा थैंक यू। सो एटलीस्ट वो तो भी सोने के पहले सुनते जाओ रे ये मेरी गुरु मंत्र सीरीज, या एटलीस्ट दिस 5 मिनट्स का रिवीजन ऑन द डेली बेसिस, इतना तो भी रोज सोने के पहले सुनते जाओ। चलो, हाउ मच टाइम? यस बेटा टुडे विल सी सईद, डोंट वरी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो एवरीवन come to TYK number 3 first. Come to TYK number 3. Come to TYK number 3. Chalo. The following information is presented by Mr. Z, a stock broker, relating to his holding in 9% central government bonds. तो भाई साहब की इन्वेस्टमेंट है 9% इंटरेस्ट रेट सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ओपनिंग बैलेंस बेटा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन ओपनिंग बैलेंस 1,20,000, cost 1,18,000, nominal value of each unit is ₹100। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा
Interest dates are 30th September and 31st December, and Mr. Z closes books on 31st December. So balance sheet date is not equal to interest received date. So write down balance sheet date is not equal to interest receipt date. Therefore क्या होगा? Yes. Therefore tell me क्या लिखना पड़ेगा? चलो जल्दी से बताओ. Therefore क्या लिखना पड़ेगा? But a P&L accounts, yes, you can show it separately. They have not shown it in the interim dividend in the investment column. In ICI study material, you got it in the dividend column. What ICI has done, yes, I will tell you. Yes, ये बहुत सारे students का एक confusion है. See बेटा, when ICI prepared these answers, study material कहाँ गया रे अपना? हाँ, तो ICI ने क्या किया हुआ है? Now this interim dividend where they written बेटा in dividend column. And dividend is nothing but it's a P&L beta. Dividend where they are going to transfer it to P&L. See this in the P&L. So instead of showing dividend column here, I have prepared it separately. See, dividend means it's ultimately you are going to transfer it in the profit and loss account, Lakshmi ji. So it's better to prepare P&L account separately. So see, ICI ka answer sometime it may be different from answer is final, answer is correct, but presentation way because accounting is an art. ठीक है, अपना अभी हर एक का अपना अपना तरीका है. फॉर एग्जाम्पल वाई आई एम टेलिंग यू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इज एन आर्ट. सी बेटा, वेन एवर बेटा माई वाइफ जब भी वो पूरे के पूरे कपड़े लगाती है, जब भी मतलब क्या करेगी कि 100% जब वो सपोज हम लोग जब इस्त्री से आके प्रेस से आके जब हमारे घर में वो कपड़े आते हैं तो बेटा वो मुझे लगाने को बोले तो मैं कैसे भी लगा देता हूँ, और वो इतना सिस्टमेटिकली तैयार करके देखेगी ना. सो दिस इज एन आर्ट. सो एवरी पर्सन, यस बेटा, नाउ कुकिंग स्टाइल इज ऑल्सो नॉट सेम ऑफ योर मदर एंड बेटा हो सकता है कि आपके ये सिस्टर का द कुकिंग स्टाइल में भी डिफरेंट, और सपोज वाइफ का कुकिंग स्टाइल इज डिफरेंट. अभी मदर एंड वाइफ का कुकिंग स्टाइल डिफरेंट होगा. व्हाई? बिकॉज दिस इज एन आर्ट. अभी मम्मी को तुम बोलोगे चलो साउथ इंडियन हमारे घर में मम्मी बहुत अच्छा बना लेगी, बट एट द सेम टाइम सपोज इटालियन होगा तो पास्ता वगैरह मेरी वाइफ अच्छा बनाएगी. सो दिस इज एन आर्ट बेटा. सो हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. सो हियर ऑल्सो द प्रेजेंटेशन माइट बी डिफरेंट फ्रॉम ICI presentation. So here dividend column I will enter it separately in the profit and loss account. Okay, so this is how I have prepared working notes. ICI has given the dividend column, but ultimately it is transferred to P&L account. So instead of preparing, it's not in investment account. See, investment account means amount column. What is the investment account? It is the amount column. ठीक है? ए बेटा प्रथम दवे कहाँ करत हो? इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट आएगा ना? यस बेटा सही. ठीक है. तो सबसे पहले तो देयर विल बी बेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंटरेस्ट आएगा. ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंटरेस्ट आएगा. ठीक है, चलिए. सो टिल नाउ, यस, एनी क्वेश्चन टिल नाउ बेटा? नो. चलो अभी डेट वाइज सीक्वेंस आप मुझे बताओगे. हाउ मेनी डेट वाइज सीक्वेंस? आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस आंसर. You will prepare it. So there are two dates, 30th September and 31st March. So you are going to tell me dates ka sequence. Date ka sequence you are going to tell me. Face value is 100, beta. Face value is 100. Which column you are going to add over here? Date wise sequence बोलो. I am giving you exactly 3 minutes. चलो टाइप कर दो.
डेट वाइज सीक्वेंस देखो। हो गया क्या? चलो हो गया सब बच्चे। फास्ट फास्ट फास्ट, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस, जल्दी से बताओ। आज का सेशन मिस नहीं करना चाहिए था। नेहा पटेल, यस बेटा, वेरी गुड। नेहा पटेल ने सीक्वेंस लिख दिया। फर्स्ट एंट्री विल बी ऑन द 1st of January. सेकंड एंट्री, नाउ दे पेड इंटरेस्ट ऑन 30th September. So here 3 months का interest in first entry. Here 5 months. Then second date is 31st March, hidden. So here it is a hidden entry. Last interest paid on this September. So 6 months का interest on how many debentures beta? 1,20,000 plus 20,000. So here it is 1,40,000. Interest on 1,40,000. So 1,20,000 plus 200 means 20,000. So you can write over here. It's a 20,000. So 1st July को बेटा what you are going to do? Sold 500 units. X interest out of original holding at ₹100 sir, at ₹100. So 1st July को last interest pay कब हुआ था? So you paid it on 31st of March. April, May, June बेटा 3 months, only 3 months. Okay. So here it's the fourth one. 1, 2, 3, 4. So this is a fourth transaction. 31st March को हमने पे किया। बीच में आया सर 30 सितंबर। 30 सितंबर, यस सर, 30 सितंबर आया। सो 30 सितंबर को क्या हुआ सर? दिस इज अ फोर्थ ट्रांजैक्शन एंड व्हेन वी पेड द लास्ट वन इज 31st March. सो 1,40,000 minus, yes beta, what is the face value? 50,000. So you left with beta 140 plus 50, yes 90,000. So 90,000 का interest you have to pay. Okay, interest paid on 6 months, 6 महीने के लिए हमने इंटरेस्ट पे किया सर। परचेस 150 यूनिट्स एट ₹98, कम इंटरेस्ट सर, कम इंटरेस्ट। सो यहाँ पे हमारा कितना हो गया? 1 October 0 month. So last interest paid on 30th September 0, and what are the units? 15,000 units. And then 1/11, तो लास्ट इंटरेस्ट पेड ऑन 30th September. So 10 महीने का, 1 महीने का आया 1 month. So 1 month will be the answer. And what is the hidden date now? 31st December. So now 150, 90,000 plus 1 lakh, 90,000 plus 15,000 minus this is 30,000. तो हमने ये 30,000 का पेमेंट कर दिया है। सो कितने यूनिट्स हो गए मेरे पास? 90 plus 15 minus 30. So लास्ट में मेरे पास बचेंगे 75,000. Am I correct बेटा? 75,000. Yes sir, you are correct. 75,000 I left with, and last entry 75,000 interest for 3 months. Closing receivable. Closing receivable. So this is how I have to prepare my sequence. So how many days बेटा? Yes, कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया? देखो 1, 2, 3, 4, 5। एक सेकंड ना, मैं वो डेट्स बोलता हूं आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 transactions are there. Total transactions 8. How many of you have got the correct answer? एट ट्रांजेक्शन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. बेटा Subhashri, only 7 transactions written. Only dates I want.
So there are beta, you have to start from 1st Jan, na? 1st Jan you are not written. Subhashri, 1st Jan is also date you have to record, na beta? Okay, so 8 transactions are there. Yes, how many of you got this answer? इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा सर 31 दिसंबर को एंड 31 मार्च, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आने वाला है. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर सर? 30 सितंबर को लास्ट इंटरेस्ट पे हुआ था. सो नाउ इट्स इजी. यस, अरे चलो जल्दी से बताओ मुझे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ. यस यस, इति गॉट द सेम आंसर. वेरी गुड बेटा. चलो अभी हम लोग लिखेंगे इसको. टाइम लगा के लिखना है क्या बेटा? टाइम लगा के लिखना है. टिकटिकी जी, टिकटिकी जी को बुलाओ क्या? और यू आर नॉट कंफर्टेबल विद टाइमिंग्स, तो वन क्वेश्चन यू वांट विदाउट टाइम, और यस टिकटिकी जी. चलो, सो एक प्रॉब्लम हम लोग विदाउट टिकटिकी जी करते हैं. आ जाओ आंसर में. ओके चलो, write down on 2 pages. You can write on 2 pages. Books of Z, investment account 9%, central government bonds. Date, particulars, face value, interest, cost on 1 page. Date, particulars, face value, इंटरेस्ट, कॉस्ट. चलो मस्त है एकदम. प्रॉब्लम इजी प्रॉब्लम है. यस सर. यस पुनीत यादव, if your handwriting is small you can finish on 1 page. No beta, we will assume he is investor, otherwise for him it is current investment. For him it is current investment. चलो, yes आचार्य जी, वेरी गुड. टुडे प्रैक्टिस सेशन होने के बाद भी बहुत से स्टूडेंट्स दे मिस दिस सेशन. यार आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. चलो कोई बात नहीं, डोंट मिस योर सेशंस. 1st January 2001. चलो फटाफट, आई डू नॉट हैव टाइम नाउ. यस, ड्रॉन ड्रॉन ड्रॉन. एवरीवन इज रेडी. ड्रॉ कर लिया क्या? ओके, सो वी विल एज्यूम दैट नाउ यू आर रेडी. स्टेडी, गो. ठीक છે પૂજા બેન. So here two balance brought down. Face value is 1,20,000. Cost is 1,18,000. And now you are aware, red pen से लिखो नहीं तो, to interest receivable 1,20,000 पे 9% into 3/12 into 3/12. So opening balance कितना लिखोगे मेरे दोस्त? 2,700. ओके,
आफ्टर वन लाइन बेटा नेक्स्ट डेट, चलो पहला तो हो गया 1st March, so you already written over there 5 months. दूसरा पेन किधर गया रे, रुको रुको रुको, थोड़ा यार परेशान करता है ये पेन. First March to bank, यस बेटा 20,000 में से 20,000 इंटू 9% इंटू 5/12, 750, 750, 200 इंटू बेटा the cost is x interest, sorry 98, x interest 98, so 200 into 98, should I deduct interest? No sir, it's x interest, so 200 into 98 we are going to record it at 19,600. It's purchase 19,600. Next date 31st of March, by bank, interest received date, sir don't write it in face value column and cost column, sir don't write it. Okay, so my interest will be on 1,40,000 into 9% into 6/12, so 1,20,000, 1,40,000 into 9%, 9,450, sir. I'm why I'm getting the wrong answer, sorry. I multiplied by 1,40,000 into 9% into 6/12. Sorry, मैंने कितने इसका लिया था, what happened here? हाँ, 6,300 I'm getting the answer. Correct है? The next date बेटा, next date is 1st July. 1st July को sold 500 units, sir sold. बेटा whenever you are selling, you have to prepare working note. After बेटा next page पे working note करो या 3/4 page के बाद. So buy bank 50,000 for how many months बेटा? 3 months. So 50,000 into 9% divided by 4 or into 3/12 is 1,125. And at what price you bought this, sold these debentures? Yes beta, at what value? 500. You multiplied by rupees 100, sir 100 से हमने इसको multiply किया at x interest. Okay sir, 100 से multiply किया, so I sold it for 50,000. Now sir, which method you are going to apply here? In the question itself given that the FIFO method, sir, it is specifically mentioned FIFO method. Now what is FIFO method? See, I bought first lot 1. Lot 1 is on, beta I already had 1,20,000 का lot. Okay, lot 1 opening lot था. Then I bought 20,000 का lot when on 1st of March. Okay, and I sold out of this 50,000. Now first in first out, so I sold lot of number 1. Okay, so first in first out. Here I won't consider lot 2 because first in first out. तो याद रखो, सो FIFO में क्या होगा, 1,20,000 शुरुआत से था, 1,20,000 शुरुआत से था, तो उसी में से जाएगा 20,000, उसी में से जाएगा 20,000. ओके, गॉट द कॉन्सेप्ट. तो उसी में से आपका कितना जाने वाला है, 20,000. चलो, सो वर्किंग नोट 1 आफ्टर 1 पेज. चल रहा बेटा, वर्किंग नोट बना. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बॉन्ड, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, यहां पे मैं बनाएंगा कंपटीशन एंड रुपीज. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कंपटीशन, रुपीज. रोमन 1 सेल्स वैल्यू, रोमन 1 बनाएगा सेल्स वैल्यू.
as above. As above. What is the sales value, beta? Tell me what is the sales value? Sales value is a કેટલી છે રે sales value? 50,000. 50,000. 50,000 की सेल्स वैल्यू है. रोमन 2 लेस कॉस्ट ऑन सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स. यस, टेल मी द अमाउंट. कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,18,000 फॉर 12,000. ओके, 1,200 और 1,20,000. 1,18,000 for 1,20,000. 1,18,000 for 1,20,000. तो बेटा तो कितना बेचा आपने? 50,000 you sold it. Very good. So 50,000 you sold it. 1,18,000 divided by 1,20,000 first in first out, and you sold 50,000. So 49,167. Sir, you are in profit. You are in profit, sir. Profit, not loss. 50,000. Profit of 833. I'm in profit of 833. Very simple working note. This is a FIFO method. FIFO. So I have not considered like weighted average all debentures. I consider only first lot because first in first out chere. Costing me you will understand. First in first out, last in first out. It's very simple, sir. To bank, ekdam easy tha, and here I will write on 1st July to P&L. Profit on sale. What is the amount? 833 only in cost column, sir. Which is the next date, sir? Which is the next date now? Which is the next date? 1st July हुआ. 30 सितंबर है सर. 30 सितंबर is the next date. तो 30 सितंबर को क्या होएगा? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड होगा. पेड क्यों लिखा है तुमने? इंटरेस्ट रिसीव्ड होएगा. हाँ, 30 सितंबर आ जाओ. कंपनी पे करेगी, हम लोग रिसीव करेंगे ना. बाय बैंक. हाउ मेनी डिबेंचर्स बेटा? 90,000. 50 बेचा ना आपने. 90,000 इंटू 9% इंटू 6/12 6. कितना आएगा? 90,000 इंटू 9% into 6/12, sir. What is the amount? 4050. So you saved a lot of time, beta, doing calculations on the question itself. It saves our time. Okay. Then what happened? 30 सितंबर हो गया. 1st October को आते. चलो 1st October को आ जाओ. What is the entry on 1st October? To bank. To bank, sir. Very next day, sir. Bank. To bank. Purchase how many debentures? 15,000. Sir, zero interest. 150 into how many units purchase? 150 units at 98 come interest, sir. 98 come interest minus 0. 0 interest है ना. So X interest and come interest, it doesn't matter over here. So 98, 14,700. You recorded it for 14,700. It's very simple, sir. 14,700. It's very simple. 14,700 हो गया, sir. Then what happened? 1/11 को by bank. By bank. $30,000. By bank 30,000. Into 9%. For how many months? 1 month. 1/12. 225. 29,700. And working note 2,
Profit on sale of bond. Roman 1 sales value. As above. 29,700 less cost of sales. Now again, how many debentures sold beta? 30,000 ना. From which lot बेटा? कौन से lot में से बेचा आपने? 30,000. So here also, yes, 30,000 from the lot 1 only. So 30,000 from lot 1. ठीक है? Lot 1 में से ही बेचा हमने. So again बेटा, working note 2, 1,18,000 from lot 1 only. How many debentures were there? 1,20,000. So you sold 30,000 lot के bonds. So 1,18,000 divided by 120 into 30. So what is the value? 29,450. Again you are in profit. कितना आया है मेरा? 29, sorry, 500. 500 आया, sorry. It's a profit. 1 minus 2. 200 is a profit. 200 is a profit. So 11 को 2 P&L, profit on sale, amount is 200. Amount is 200. Yes, sir. And last one now. He left with 75,000 balance. 75,000 balance. Closing balance है ही नहीं. So 31st December, buy interest receivable first on how many beta? Bonds. Now you have last में 75,000 bonds into 9% into 3 by 12. Don't write it in face value and interest column. 75,000 into 9%. Concentrate beta. 3 by 12. जल्दी जल्दी concentrate करो. 1687.5. 1688. 1688. And now write buy balance carried down. चलो. 75,000 आएगा balance carried down. And tell me इधर का balance carried down. चलो cost column का आप लोग बताओ. Fast. And then to P&L. Interest को P&L में transfer करो. Buy balance carried down and interest को P&L में. Yes, one question you want to try beta. 73,633 and P&L का टोटल आएगा आपका मेरा आया 9938. Is it correct? चेक करो 9938 and 75,000 73,633. Is it correct बेटा? हाँ जी. बेटा 1,20,000 is we bought it 1,18,000 at पूरा 1,20,000 ना राहुल.
हमने 1,18,000 पूरा 1,20,000 फेस वैल्यू थी ना, जब लिया तब 1,18,000 पूरे 1,20,000 के लिए था, तो उतना ही डिवाइड करेंगे ना बेटा। हम लोग इधर 70,000 से कैसे डिवाइड करेंगे बचे हुए इसमें, ऐसा नहीं होता ना। जो जिसपे खरीदा उसके ऊपर ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट। मतलब 70,000 से कैसे डिवाइड करेगा, मैं 1,18,000 बेचा वो बात अलग है, पर 1,18,000 खरीदा था ना, 1,20,000 जिसकी फेस वैल्यू थी। तो राहुल आपकी कॉन्सेप्ट थोड़ी सी गलत है बेटा, बट आई थिंक नाउ यू रेक्टिफाइड। यस, नाउ टेल मी नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको टाइम दूं या मैं ही सॉल्व करूं, या आई विल चेक ओनली द आंसर पार्ट? हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर इज नो बेटा, आई विल टेल यू दी ओनली कैलकुलेशन पार्ट. So before break beta we are going to solve this question. I am going to give you time for that, beta. Illustration 4 के लिए वेरी गुड बेटा रुशिता। यस, मैं आपको एक ही बात बताता हूं, हियर देयर इज अ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज आपको 1% ऐड करना है, ब्रोकरेज आपको 1% ऐड करना है इफ देयर इज अ परचेस। ओके, सो परचेस होगा तो 1% ऐड करना। So I'm not going to give you the answer. Okay, and best part of this question is that there is balance sheet date and interest payment date, receipt date are same. So here balance sheet date is equal to interest received date. इंटरेस्ट रिसीव डेट फॉर वन थिंग, यस बेटा, एक के लिए मैं कैलकुलेट करके देता हूं, रिमेनिंग यू सॉल्व बाय योर ओन एंड जस्ट चेक द आंसर। ओके, नाउ इट्स योर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन फॉर यू, सब लिख के देता हूं, बट कैलकुलेशन आई वांट फ्रॉम योर साइड, तो ध्यान दीजिए। बैलेंस शीट डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट रिसीव डेट, देयरफॉर ओपनिंग, नो ओपनिंग एंट्री, नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल एंट्री। No opening and closing interest receivable entry. Okay, very easy छे, very easy. चलो 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस, लास्ट इंटरेस्ट कब पे हुआ था? 31 मार्च, तो इधर 0 आएगा। नॉमिनल वैल्यू सेम क्वेश्चन इज देयर, 1 जुलाई 31 मार्च, 3 months. Again 30th September is a hidden date over here. 30 September, 6 months का इंटरेस्ट 1,30,000, 1,30,000, 100 मतलब 1,30,000। 1 अक्टूबर 0, 1 month, सॉरी 1 जनवरी है ना, इट्स 3 months। जनवरी मतलब 4 months एंड देन 31 दिसंबर। अभी देखो 1,20,000 प्लस 10,000, 1,30,000, देन सोल्ड 20,000 मीन्स 1,10,000, 5,000 वापस खरीदे, 1,15,000, so you left with 95,000, 31st December for 6 months. सॉरी 31st मार्च, सॉरी 31st मार्च इंटरेस्ट का डेट, 31st मार्च, 95,000 you left with, not December, 31st March last date. Sequence hidden entry, 2 hidden entries, 30 September and 31 March. Brokerage you have to add. चलो स्टार्ट करके देता हूं, स्टार्ट करके देता हूं, यस स्टार्ट करके देता हूं। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, डेट पहले तो लिखना था आपको, बुक्स ऑफ पुरोहित,
investment account, scrip, 8% debentures of P Limited. That particulars face value interest cost. ठीक છે? Next. 1st April, to balance brought down, face value 1,20,000, 1,18,000. I will give you starting point. बेटा मैं पहले आपको स्टार्ट करके देता हूं. Then बेटा next date is 1st July. 1st July. To bank. Yes, every one of you. Please now focus. To bank. Now you have to solve by your own. Yes, कितना बैंक में गया बेटा? 100 डिबेंचर्स. 100 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10,000 आएगा यहाँ पे. ओके, 10,000. So interest is 10,000 into 8% into 3/12. 200 रुपया आएगा. 100 कितने में बाय किया? 100 कितने में बाय किया बेटा? You bought it for 98 and plus 1% brokerage. Whenever purchase, brokerage ऐड करना है आपको, and sales होगा तो -1%. ओके, $100 into 98 plus 1%, 9898 9898. Okay, chalo. So now you solve by your own. Whenever there is a sales, you will deduct that. चलो देखते हैं कितने बच्चे आप में से करेक्ट करते हैं. यस, यू एग्जैक्टली देखो 12 मिनट्स, एग्जैक्टली 12 मिनट्स. ट्वेल्व मिनट्स है आपके पास. मैं एग्जैक्टली 12 मिनट देता हूं, देन वी आर गोइंग टू चेक द आंसर. सो 12 मिनट्स में आपको चेक करना है, उसके बाद ब्रेक दूंगा. सो बिफोर दिस, यस, कंप्लीट दिस क्वेश्चन. चलो 12 मिनट है आपके पास. चलो खुद से भी आना चाहिए अभी. कोमल बेटा, फीफो में क्या होगा? कौन से पहले लॉट में से जाएगा बेटा? कोमल, पहले लॉट में से जाएगा तो देख 1,20,000 आपका पहला लॉट 1200 है. अभी आपने सपोज उसमें से 200 बेचा तो पहले लॉट में से जाएगा. सो 1,20,000 कितने में खरीदा था? 1,18,000. तो कॉस्ट ऊपर लिखने की, डिवाइड बाय 1,20,000, और जितना बेचा उसकी फेस वैल्यू वहां पे लिख देने का, तो वो कॉस्ट आ जाएगा अपना. इट्स वेरी सिंपल.
चलो हो गया, 12 मिनट से ऊपर टाइम दे दिया आपको। चलो ओवर 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 फास्ट। यस, आ जाइए। व्हाट इज द आंसर? चलो लेट्स चेक इट। यस, टेल मी व्हाट इज द बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन कितना हुआ बेटा? सी सी द आंसर। आईसीआई का आंसर सिखाता हूं। फर्स्ट वन इज 1,20,000, करेक्ट है? हाँ, ये हो गया था, ये हो गया था। आफ्टर दैट बेटा यू रिसीव्ड द इंटरेस्ट, सो 5,200 रिसीव्ड द इंटरेस्ट, करेक्ट है? पहले 1 जुलाई आया होगा ना? हाँ। देन यू सोल्ड इट 20,000 at 19,800. So beta 19,800, and how much profit you are getting? You are getting the profit of 133. Yes, very good. So profit of 133 you should get. So sales value less cost of sales. So what is sales value? I will write over here. It's sales value 19,800 less cost. How you calculated the cost? 1,18,000 for 1,20,000. So for 20,000, how much? 19,667. So you are getting 133 profit. So 133 profit. This is working note 1. Yes, correct है बेटा। थोड़ा अभी खुद से करना पड़ेगा। यू हैव टू डू बाय योर ओन। अभी सब कुछ मैं आपको स्पून फीडिंग में नहीं दे सकता हूं। 1 जनवरी you bought again 5,100 interest 4,949, 50 into 98 minus 100 plus 1%. After that buy bank 19,602, and now you are in loss of ₹65. Loss 65 आना चाहिए। You check it from your study material now, and then interest की entry 3,800, very good. And finally we are doing buy balance carried down. But here also in question it's given that 99 is the closing value, market value is 99. So last working note beta, yes, here one more working note. What is the one more working note beta? Yes, what is the एक working note आएगी आपकी? Working note 3, valuation of debentures, lower of cost. Now cost is beta 1,18,000, you left with, it's for 1,20,000, and उसमें से आपके कितना लॉट बचा बेटा? 80,000 का लॉट बचा, प्लस 9,898 प्लस 4,949. $93,514. 93,514, and market value 950 into 99. It's your last working note, हाँ बेटा, 94,054. So 93,514 पे आपने रिकॉर्ड किया, लोअर में 93,514. So you can see here you have recorded it at buy balance carried down 93,514. Yes, so we finish with this question. Any difficulty?
चलो, एनी डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन बेटा, जल्दी से बताओ मुझे। कोई भी डिफिकल्टी होगी तो मुझे बता दो मेरे दोस्त। चलो जल्दी बोलो बेटा फ्रेंड्स, फटाफट। यस, एनी डिफिकल्टी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। इजी छे। If market value is lower, beta, we are going to write market value and balancing figure is by P and L. Suppose if it is 90,000, if it is 90,000 market value, so 354 will be your by P and L account. Loss P and L में जाएगा. Rahul Jain, yes, beta. ठीक है? Yes, you do the practice. Yes, now after break, beta, we are going to see which question. Yes, wait. I will tell you the question. Um, one important concept I'm going to explain it. And question number 2, TYK 2 and 5 we are going to solve. One important concept I'm going to explain you, that is TYK number 1. Yes, एक concept रह गया है जो 100 pages के book में लिखना है. I forgot to tell you that concept. TYK 1 after break, very important one. So now we are going to meet at 8:30. ठीक है बेटा, स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, डोंट वरी। प्रथम, स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, डोंट वरी बेटा। यस, चलिए टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर ब्रेक बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट शेयर्स का रिनाउंसमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, सो वो हम लोग देखेंगे। 8:30 को वी आर गोइंग टू मीट। चलो आ जाओ 8:30 को, ब्रेक ले लेना।
Come back once again. Students, one question. Okay, many of you are not getting the answer in the proper way. Do one thing. Watch debenture session once again to understand all basic concepts in detail and try to solve these questions by your own using टिक-टिकी-जी टेक्निक. एकदम सिंपल वे है कि इसको टिक-टिकी-जी टेक्निक को यूज करके आप लोग फटाफट इसको सॉल्व करो. चलो, so now let's come to question number 1. So first I will explain you the theory of this question and then beta you will get the concept of right shares. So beta right shares. Now what happens after issuing right shares in the market? Okay. So tell me, right shares market में आने के बाद क्या होगा? Day after tomorrow, we are going to start with the fresh chapter, which is the departmental accounts. Departmental accounts is really, as compared to other chapter, once you got the logic, it's very simple. But departmental accounts is not like, beta, it's a separate chapter. So try to attend it in the live session. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज के सेशन में बहुत सारे बच्चों ने छुट्टी मार दी है क्योंकि उनको लगा प्रैक्टिस सेशन हमें आएगा नहीं क्योंकि वी हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चंस प्रीवियसली. तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. हाँ जी. तो सुधांशु शेखर, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट एक बार समझा दीजिए बेटा. मैंने ऑलरेडी बहुत बार समझाया हुआ है और ये देखो कुछ तो चीजें होगी. ऐसा हमेशा आप याद मत रखो कि मैं हर चीज आपको स्पून फीडिंग करूंगा और सीए ये कोर्स स्पून फीडिंग का है भी नहीं. तो पहले तो आप ये ध्यान में रखना और आप खुद से कुछ तो सॉल्व कीजिए बेटा. आज राइट शेयर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं. राइट शेयर्स, यस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ आफ्टर इशूइंग राइट शेयर्स इन द मार्केट. बट ऑब्वियस मार्केट में प्राइस विल गो डाउन. व्हाई? बिकॉज सप्लाई विल बी मोर. supply is more then beta price comes down. ये याद रखो. Because after right shares market में number of shares will get increased and market में number of shares is getting increased. It means prices are going down. So market में जब price down होगा तो क्या होने वाला है जल्दी से समझ लीजिए. So यहाँ पे suppose if you intentionally bought one right share, okay, when intentionally you bought shares before issuing right issue. Why? Because you already know the market news that right shares are going to issue in the market. So you bought one share before right issue, which is called as come right. Okay, so come interest and X interest is different. Don't try to merge all these concepts. See, debenture में come interest and X interest means what? Come interest means including interest and X interest is excluding interest. Now come to your 100 pages की book में. So what is the difference? Come interest and X interest means including interest and excluding interest. But come right का meaning होता है before right. Before right, remember, before right shares. So it's a different concept. So you can write in the 100 pages book. So come interest means including interest, X interest means excluding interest. But come right means before right shares and X right means after right shares. X right means after right shares. So this is a difference. After right shares. After right shares. So you got the difference, beta? So come right and X right. Yes, beta. Diksha, very good. So before right and after right. Now intentionally I bought one equity share. Why? Because I know the market news. Market news मुझे पता है क्या न्यूज लगी है मार्केट में. मार्केट में ये न्यूज आया है कि भाई राइट शेयर्स अनाउंस होने वाला है. सो आई बॉट वन शेयर. बट ऑब्वियस दैट शेयर का प्राइस विल बी एज कंपेयर टू आफ्टर राइट इट इज बेटा हायर प्राइस. ओके, नाउ व्हाट हैपन? मिस्टर एक्स एक्वायर्स 200 शेयर्स. तो अभी मिस्टर एक्स ने 200 शेयर्स एक्वायर किए एट कम राइट प्राइस. तो एक शेयर की प्राइस कितनी हुई? ₹70,000 डिवाइड बाय 200. सो योर राइट शेयर प्राइस इज ₹350 पर शेयर. कितना रुपीस है? 350 पर शेयर. 350 पर शेयर. एकदम इजी. 350 per share. Now
He subsequently received an offer to write the fresh issue in the 1:1 proportion of 107. He does not subscribe the right but sell the right for rupees 12,000 and the market value goes down. अभी देखो market value, this is an exception to the right shares. You remember that whenever we renounce the right, normally we consider that 12,000 rupees in the profit and loss account. Normally renouncement हम लोग किधर डालते? Sir, you taught us that renouncement we transfer it to profit and loss account. Okay, so renouncement we transfer it to profit and loss account, but here exception is there. What is the exception, beta? Exception is very simple, that here whenever we are issuing any right shares or before right and after right shares, beta, remember the price which is down from 70,000 to 60,000. So 10,000 is your reduction in the price, and that 12,000 you will credit to investment account, where you are going to credit it investment account. So if price is reduced, remember this is the exception, if price is reduced, that from 70,000 now your market value of the share is goes down by 10,000. So आप लोग क्या एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे एंड रिमेनिंग 12,000 आप P&L में 2,000 rupees record करोगे. So whenever you are selling your right to another person, and then you will adjust it against your investment. So what are the entries I'm going to pass? See, I bought one investment in shares. So what is the entry? See the entry. I bought it at rupees 70,000. Correct है? To bank, I bought 70,000 में कितने shares मैंने buy किए? 200 shares into rupees 350. ठीक है? Now what happened? I sold my right, renounced my right. Okay, so now renouncement. I got one option कि subscribe करो, but yes. So normally renouncement की entry है bank to P&L, but we are here not going to pass this entry because this is the exception. This is the exception. So bank account debit 12,000. Bank account debit 12,000. Okay. To investment account 10,000. To investment account 10,000 because it's a reduction in the price. And to P&L is a balancing figure. You got this concept? येस और नो, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. व्हेनेवर, मतलब एक बार मैं समझा देता हूं. देखो जब भी आप लोग हिंदी में समझाता हो, राइट शेयर्स लिए, राइट शेयर्स लेने के बाद आपने इंटेंशनली लिए कि राइट शेयर्स होगा तो मेरे पास मुझे ऑप्शन मिलेगा, और अभी हुआ कि आपने 70,000 में राइट शेयर्स लिए और उसकी वैल्यू आपने फिर राइट को रिनाउंस किया. आपने किसी को वो जो शेयर्स आपने 200 लिए, 200 का राइट का आपको ऑप्शन मिला कि 200 आप खुद खरीदो, पर आपने बोला मुझे नहीं चाहिए, मैंने रिनाउंस किया. रिनाउंस करने के बाद मैंने क्या बताया कि P&L में डालना चाहिए. पर बेटा यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया. क्या किया आपने एक्सेप्शन? कि ये राइट शेयर्स जो है ना, वो आपने राइट शेयर्स को एंट्री को रिनाउंस करते टाइम आपकी रिडक्शन इन द प्राइस हुआ. क्यों रिडक्शन इन द प्राइस हुआ? भाई मार्केट में सप्लाई बढ़ गया ना शेयर्स का, तो 70,000 की वैल्यू 60,000 पे आ गई सप्लाई बढ़ने की वजह से. तो आपने क्या करना है, 10,000 रुपए जो है वो P&L में डालना नहीं है, 12,000 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना है जितना रिडक्शन इन द वैल्यू आया. अभी आपकी इन्वेस्टमेंट कितने पे दिखेगी? इन्वेस्टमेंट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी, नाउ कैरिंग अमाउंट मतलब बैलेंस शीट वैल्यू. कैरिंग अमाउंट मींस बैलेंस शीट वैल्यू. यू विल रिकॉर्ड इट एट, बेटा कितना रुपीस पे बताओगे? 60,000. यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट एट 60,000. इट्स वेरी सिंपल सर, वेरी वेरी सिंपल सर. 60,000 में हम लोग बताएंगे कैरिंग अमाउंट 60,000 में. यस, यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट? यस, वेरी गुड. चलो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में. यू आर गेटिंग द इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैरी करना पड़ेगा आपको. यस, स्वाति जी, understand the concept. Now whenever you are renouncing your shares, normally you record it in the profit and loss account. But here beta, what happened? Your shares market price when you bought the share, that costing is rupees 70,000.
You thought that I will sell that right, means I will get the right issue, means I will get 200 shares for 200 shares. It's very simple concept. Now what happened? You are not subscribed for it. You renounce that right at rupees 12,000. You transfer that right to some another person. Now your investment value, previous investment, 70,000. Why? It is in the market. Due to demand supply rule, your prices go down because supply is more after right issue. After right issue, beta, supply is more. So your 70,000 carrying cost, now it comes to 60,000. You renounce your right, you transfer your right to any other person at rupees 12,000. So now 12,000 you got it, and that 12,000 which you received will not be transferred directly to P&L because there is the exception for this rule. So suppose this question comes in exam, beta, only of theoretical question, they don't ask you in the practical question. This is only one question exception pucha jayega. So don't worry, this question will carry only 4 marks, and in other questions you compulsory have to transfer it to profit and loss account. I don't think ICAI will ask you the question in here in detail question. No, no. So here the answer is whenever beta that reduction in the price in the carrying amount will be credited to investment account and remaining balance is profit and loss account. See the answer. Where the investments are acquired on come right basis, means come right basis means before right shares, and market value of the investment immediately after their becoming X right is lower than the cost. Yes, 70,000 ka 60,000 hua for which they acquired. It may be appropriate to apply the sale proceeds of rights to reduce, means sale proceeds of right means renouncement amount that you received to carrying amount of such investment to the market value. In this case, the X right market value of 200 shares after reduction falls to 60,000, and therefore sale proceeds of 12,000, 10,000 may be reduced to carrying amount and 2,000 will be credited to P&L. Now it's simple beta कि मुझे 12,000 रुपए I received, 12,000 I received, out of that 10,000 I credited to investment account, credited to P&L account. Swati ji, now it's clear? Yes. How to write the answer? So entry you can write over here, bank account debit 12,000 to investment 70 minus 60, 10,000 to P&L balancing figure 2,000. बेटा most important concept 4 marks के लिए, exception to renouncement, exception to renouncement. चलो now we will solve question number 5, TYK 5. चलो TYK 5 solve कर लो. Yes, टिकटिकी जी को लगाऊंगा. And now I'm not going to wait. अभी मैं एग्जाम स्पीड से जाऊंगा. So those students who can't catch me, बेटा, you need a lot of practice. Try to solve with me. Yes, अभी मेरे साथ solve कीजिए फटाफट. Yes. लॉस हुआ तो बेटा नहीं, अप टू 12,000 ओनली. लॉस यू डोंट हैव टू बुक फॉर. डोंट बुक लॉस. ओनली इफ रिनाउंसमेंट में more than 12,000 हुआ तो we are going to record only bank account debit to investment, whichever is lower. Good question. Yes, Devarjun Das ji. So if it is below, means your investment goes down by 15,000. Suppose if your investment goes down by 15,000, so bank account debit to investment, it is restricted to 12,000 बेटा. ओके, यस. तो उनका ये क्वेश्चन है कि सर मेरा लॉस 75,000, सपोज 70,000 में लिया था, इट इज 55,000 आया. सो 15,000 से डाउन हुआ, तो 15,000 से डाउन हुआ तो भी मैं कितने पे रिकॉर्ड करेगा? मैं सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करूंगा बेटा 60,000 पे. सॉरी, जितना मेरा मैक्सिमम नीचे आएगा 58,000. 12,000 के नीचे में नहीं जाऊंगा रिनाउंसमेंट में. ओके, यस बेटा, गुड क्वेश्चन. चलो नाउ टिकटिकी जी आ जाइए.
On 1st April 2001, Mr. Vijay had 30,000 equity shares, book value of 4,50,000. Turant, I'm going to start the answer. Books of Vijay, write down. Investment account, scrip, equity shares of X Limited. Date, particulars, number of shares, rupees. Date, particulars, number of shares, rupees. Half page. Chalo, draw fast. Date, particulars, number of shares, rupees. Date, particulars, number of shares, rupees. Okay. So date 1, 30,000 equity shares of 4,50,000. So date 1, 1st April 2001, to balance brought down, 30,000 shares, 4,50,000. 22nd June, post acquisition and pre acquisition dividend. So 22nd June 2001, to bank, 5,000 shares, acquired for 80,000. Acquired for 80,000. Next, the directors announce bonus shares, 1 share for 7 shares on 10th August. Okay. 10th August, to bonus, 35,000 into 1 by 7. Again 5,000 dash. Next, 31st August, the directors write shares in the ratio of, yes, so kitna hua? 15 per share. So I have now 40,000 shares into 3 by 8, 15,000. Due date for payment is 30th September. 2/3 of the right subscribe and balance is sold. 2/3 means 10,000 and 5,000 sold. Okay. 30th September, to bank, 40,000 into 3 by 8 into at 15 rupees, 10,000 into 2 by 3. 2/3 we subscribe na beta, into 15. Okay. So 1,50,000, and I will prepare profit and loss account after half page. Particulars rupees, particulars rupees, by right renounced
5,000 shares at rupees 2 each, 10,000. You can add debt column also in P&L, but ठीक है अभी नहीं किया, it's okay. On 31st October, Vijay received the dividend 20%. We will assume नीचे note लिख देंगे. Yes. So assumption, pre-acquisition dividend received 31st October by bank, 5,000 shares of rupees 10 each into 20%. Don't write it in number of shares column. So this is 10,000 pre-acquisition dividend. And post-acquisition on this 30,000 shares, that is by dividend, 30,000 shares into 10 into 20%, 60,000. 60,000. चलो, so P&L भी हो गया, post acquisition dividend. Okay, on 15 November 20,000 equity shares are sold at 5 rupees per share. चलो लिख दो. 15 November 15 November by bank, how many shares you sold? 30,000 shares, sorry, 20,000 shares you sold for 15 rupees, 3 lakhs. Sold. Working note 2, sorry, working note 1, profit oblique loss on sale 15 November 2002. Serial number, particulars, computation, rupees. Roman 1, sales value as above is 3 lakhs. Roman 2, less cost of sales. Cost of sales में बेटा 450 plus 80 plus 150. Divide by 30, minus 10 also. 30 plus 5 plus 5 plus 10 into you left with you sold 20,000. So what is the answer? $268,000. $32,000. Roman 3, profit on sale 1 minus 2, 32,000. आगे to P&L 32,000. ठीक है. Then 31st March, buy balance carried down 30,000 shares. Whether market value is given in the question? No. he weighted average method पे किया है. So balancing figure
450 plus 80 plus 150 plus 32, 7,12,000, 4,02,000. So time is 10 minutes 30 seconds. लिख दो. Timing 10 minutes 32 seconds. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. बेटा we never open dividend column. We open P&L column. Next one. Next question, you only tell me. टीवाई के 2 करना है क्या? टीवाई के 2. वेरी गुड बेटा जिया पटेल. चलो आप लोग बताओ कौन सा करना है. चलो प्रथम करता बोल रहा है टीवाई के 2 सॉल्व करेंगे. नो प्रॉब्लम. चलो आ जाओ टीवाई के 2. भूमिका इज सेइंग सर टीवाई के इज वेरी इजी. हाँ पी एंड एल का बेटा 2 बैलेंस कैरी डाउन लिखना रहेगा यार. यस पी एंड एल को भी 2 बैलेंस कैरी डाउन लिख लीजिए. नो बेटा सुधांशु टीवाई के 2 वी आर गोइंग टू सॉल्व. चलो वन मोर क्वेश्चन. टीवाई के 2 में आ जाइए. सो वी हैव फिनिश टुडे ऑल टीवाई के क्वेश्चन बेटा. वेरी सिंपल एक्चुअली. चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. आज मैं जल्दी छोड़ देता हूं आपको. डोंट वरी. डिपार्टमेंटल टॉपिक को हम लोग यस 15 मिनट में ये सॉल्व कर देंगे. 15 मिनट भी नहीं लगते, 11 से 12 मिनट लगेगा. तो उसके बाद हम लोग आज यस डिपार्टमेंटल अकाउंट्स परसों से शुरू हो जाएगा. आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी छोड़ देता हूं आपको. सो यस बेटा टीवाई के 2 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व. तो आज तो पूरा टीवाई के ही आज का दिन पूरा टीवाई के मय हो गया. पूरा का पूरा आपको आ गया बेटा. वेरी गुड. राजू कुमार जी मैं उसका एक सीरीज ही देने वाला हूं आपको ऑल टीवाई के क्वेश्चंस का. तो इसीलिए मैं टीवाई के क्वेश्चन अभी लिंक नहीं तोड़ता हूं, यही क्वेश्चंस कंप्लीट करता हूं और उसका लाइन से मैं आपको टीवाई के रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का दे दूंगा. सो डोंट वरी. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मैं पूरा का पूरा टीवाई के आपको दे दूंगा. ठीक है. चलो यस लास्ट क्वेश्चन. ऑन 1 अप्रैल 2001 टिकटिकी जी वापस शुरू करना है हमें. चलो पहले तो लिख लेते हैं. ऑन 1 अप्रैल 2001 XY लिमिटेड एज इक्विटी शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड. चलो तो लिखो. देखो बुक्स ऑफ XY लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, स्क्रिप, इक्विटी शेयर्स ऑफ XY लिमिटेड, डेट, particulars, number of shares,
rupees, date, particulars, number of shares, rupees. ठीक है, चलो ड्रॉ कीजिए फटाफट। हाफ पेज, पी एंड एल अकाउंट भी ड्रॉ कर लीजिए एंड वर्किंग नोट भी ड्रॉ कर लीजिए। चलो पी एंड एल का प्रोफॉर्मा भी ड्रॉ कर लीजिए। और इसका भी प्रोफॉर्मा ड्रॉ कर लीजिए। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कंप्यूटेशन, रुपीस। चलो ड्रॉ ऑन दी प्रोफॉर्मा लिखो अभी। यस, पी एंड एल का प्रोफॉर्मा है पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस। वर्किंग नोट 1, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल। सीरियल नंबर, particulars, computation, rupees. Roman 1, sales value. चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट रेडी, सेल्स वैल्यू एज अबाउ दो and Roman 2 less cost of sales, and after 2 lines profit loss. Date 1st April 2001. To balance brought down 15,000 shares at rupees 15, 2,25,000. Next one, 1st June, to bank 5,000 shares you acquired for 1 lakh. Bonus declare 1 share for every 5 shares. 1st July, to bonus shares 20,000 shares, 1 share for 5 shares, 4,000 dash. Next, right shares to the existing shareholder for every 6 shares 1 share. So how many shares you have? 24,000 into 1 by 6, 4,000 shares at rupees 12. Now right shares लिए and right half of the right issue लिए and half of the right sold for 8. First, to bank 24,000 into 1 by 6 into 50% and at rupees 12. 2,000, 24,000 and remaining by right renounced. In P&L credit side, 2,000 into 8, 16,000. 2,000 into 8, 16,000.
Now 30%, 20% dividend मिला. So buy bank 31st October. Buy bank. Yes. 5,000 shares into 10 into 20%. 10,000. Pre-acquisition. Buy dividend post-acquisition 15,000 into 10 into 20%. 30,000. 30,000. Next, 1st January, buy bank. Buy bank. You sold 13,000 shares. Why 13,000? Because 15 plus 5, 24 plus 2, 26. 50% we sold. 13,000 into 16.5, but brokerage is there, deducted. Brokerage we deducted. 16.5 minus 1%. 212,355. 212,355. And cost of sales divided by 26,000 shares into 13,000. So tell me the amount. So this is 1,69,500. So 169,500. So profit 1 minus 2. 42,855. करेक्ट है? $42,855. So this is my profit. And now I'm going to write it to P&L, profit on sale. $42,855. So profit के बाद 31st December, sorry 31st March, buy balance carried down 13,000 shares, and we already calculated na beta 1,69,500. So there is no closing balance. 1,69,500. It's a balancing figure. Take total 26,000. 391,855. You can take a total 391,855. Beta 10 minutes 7 seconds. 10 minutes 7 seconds. In exam also you can solve it within 11 minutes. 8 marks ka question you can solve easily. How much time you have? You have actually allowed time is 15 minutes, but we are solving it in 10 minutes, 11 minutes. आपके पास allowable time is 15 minutes to finish this question, but now you can practice it
and do it in 10 to 11 minutes. इजी है बेटा, चलो जल्दी बोलो, इजी है। यस बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। बीच में स्क्रीन का कुछ तो दिक्कत हो गया था, यस, टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ कुछ तो, आई डोंट नो, ठीक है। चलो यस, अभी इजी है। टेल मी यू वांट मोर प्रैक्टिस और नाउ यू कैन डू बाय योर ओन। चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बोलो यस। मुझे बता दो कि स्क्रीनशॉट्स ले लिया आपने। हाँ जी, अभी मुझे बताओ जल्दी से, यू वांट मोर प्रैक्टिस? Yes, investment chapter is also in the easy chapter list. Very good, beta. Done 1 second before you. Very good. Okay, yes sir. आप बताओ अभी, चलो जल्दी से, कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, या यू विल डू बाय योर ओन नाउ? इजी छे बद्दा क्वेश्चंस, वी हैव सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चन ऑलमोस्ट है, बहुत कर दिया हमने। 9th करवाओ आपको? निधि का करवाओ बेटा, है टाइम तो निधि करवा दो आपको। चलो बोलो, यू विल डू बाय योर ओन नाउ। चलो जल्दी बताओ, निधि क्वेश्चन विल सॉल्व इट, 10-15 मिनट है, चलो कर लेते हैं, 15 मिनट है बेटा, चलो है हमारे पास टाइम। चलो एक मोर क्वेश्चन वी विल डू, निधि का क्वेश्चन। निधि का क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, सिर्फ वो हिडन एंट्रीज करनी पड़ती है ना, इसलिए प्रॉब्लम होता है। चलो अभी हम लोग डायरेक्टली करेंगे। 1 अप्रैल परचेज बॉन्ड स्क्रिप 1, 12 अप्रैल स्क्रिप 2, 1 में रिसीव्ड इंटरेस्ट 1, 1 नवंबर एंड 1 में, 15 में बेटा बोनस इशू स्क्रिप 2, अक्टूबर सोल्ड 3 लाख के डिवेंचर्स स्क्रिप 1, 1 नवंबर रिसीव्ड इंटरेस्ट, अरे उन्होंने ही दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है 1, एंड 1 दिसंबर रिसीव्ड स्क्रिप्ट 2। ओके चलो स्क्रिप्ट 2 प्रिपेयर 31 मार्च ईयर एंडेड डेट पे। ओके चलो लेट्स स्टार्ट, पहले स्क्रिप्ट 1 करते हैं। यस, राइट डाउन बुक्स ऑफ निधि, बुक्स ऑफ निधि बेटा, %8 सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये स्क्रिप्ट था एक्चुअली, सॉरी, ये पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखना था फिर स्क्रिप्ट लिखना था। टेक ऑन 2 पेजेस इफ यू वांट। डेट, particulars, face value, interest, cost। चलो लास्ट क्वेश्चन बेटा, पेशेंस, particulars, face value, interest, cost। 1 by 1 स्क्रिप्ट खत्म करते हैं। वर्किंग नोट 1,
profit oblique loss on sale, serial number, particulars, computation, rupees, serial number, particulars, computation, rupees, Roman 1 sales value, Roman 2 less cost of sales after 2 lines, profit oblique loss. चलो ड्रॉ फास्ट, ड्रॉ करेंगे. डेट, particulars, face value, interest, cost. Date, particulars, face value, interest, cost. Similarly, serial number, particulars, computation, rupees. चलो डेट 1st April 2001, to bank, what is the face value? 12 lakhs. Interest is 12 lakhs into, now last interest is paid on 1st of November. November na, December, January, February, November, December, January, February, March, 5 months. 5 months. $40,000. 12,000 into 80.5 minus 40,000 9,26,000. Next date 12th April, script 2, sorry, no, 1st May we received interest. 1st May by bank 12 lakhs, 8%, 6 by 12. $48,000. Next, 1st October by bank, sold 3 lakhs, 3 lakhs into 8% into 5 by 12. 10,000. 3,000 into 81. 2,43,000. 2,43,000 as above. 2,43,000
Cost is 9,26,000 for 12 lakhs. So for 3 lakhs, how much? Two lakh 31,500. 11,500. Then 2 P and L 11,500. एक 11 by bank 9 lakhs into 8% into 6 by 12 9 lakhs into 8% 36,000. 1st November को 36,000 and then 31st March को बेटा by interest receivable 9 lakhs 11 12 1 2 3 5 months है 8% into 5 by 12 30,000 and buy balance carried down. Here it's 9 lakhs. $12 lakhs. It's 12 lakhs. 926 plus 11.5. 937,500. 937,500. 243. 694,500. And 2 P&L interest का 48 plus 10 plus 36 plus 30 1,24,000 minus 40. बेटा you can do this revision within 2 hours. पूरा चैप्टर 2 hours में हो सकता है आपका रिवीजन. It's not at all difficult. 10 minutes में P&L हो गया. And script 2 बेटा चलो लास्ट स्क्रिप्ट. yes, investment in equity shares script 2. again investment account, separate investment account. Script equity shares of X Limited. Equity shares of X Limited. Have patience. Last 5 minutes beta. चलो date, particulars, number of shares, rupees, date. हाफ पेज भी नहीं, 6 से 8 लाइन्स. 8 लाइन्स बेटा. Number of shares, rupees, working note 1, profit oblique loss on sale, serial number, particulars, computation, rupees. Very good. चलो ड्रॉ करो फटाफट. Very easy.
चलो 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 स्टार्ट। डेट 12th April to bank. How many number of shares beta? 1 lakh shares. 1 lakh shares of rupees 40 lakhs. Next, bonus issue 1,50,000 to bonus 1 lakh 15th May. Then ये हो गया bonus issue. Okay, sorry. 1,25,000 sold. Bonus shares is to confuse us. And this is 15 May. By bank. 1,25,000 shares sold at rupees 20, means 25 lakhs. Sales value as above 25 lakhs. Roman 2 less cost of sales 40 lakhs for 25 lakh shares. So for 1,25,000 shares कितना? Sorry, 2,50,000 shares. 40 lakhs 2,000 मतलब ये आया 20 lakhs. What is your profit? 5 lakhs. Roman 3's profit 1 minus 2 5 lakhs. 15 May to P&L 5 lakhs and remaining is your 31st March को buy balance carried down. Take a total 2,50,000, 45 lakhs, 1,25,000, 20 lakhs, 2,50,000, 45 lakhs and prepare P&L account. Particulars rupees. So buy interim dividend on 1,25,000 shares into rupees 10 into 18%. 10 into 18%. 2,25,000 and by profit on sale 5 lakhs. So 2 balance carried down 7,25,000. 16 minutes 39 seconds. 17 minutes. 12 mark का question है. How many marks बेटा? 12 marks. You can take a screenshot if you want. 12 mark का question है. Okay. So allowed time is 12 into 1.5. 18 minutes allowed time था. Sorry, 12 into 1.8. Sorry. Allowed time is 22 minutes. We finished before 5 minutes. Easy था बेटा. Debentures and profit on loss on sale. So friends,
आई होप नाउ यू एंजॉयड दिस सेशन। चलो जल्दी से बताओ कितने बच्चे थे लास्ट तक, देखने दो थोड़ा कितने बच्चों में पेशेंस है। यस, बहुत कम बच्चों में पेशेंस है, बहुत कम बच्चों में। सो बेटा ये जो जो देख रहे हैं ना अभी लाइव में, यही सबसे ज्यादा इनमें पेशेंस है लास्ट मिनट तक। वी कैन डायरेक्टली ट्रांसफर टू पी एंड एल बेटा। यस, एनी डिफिकल्टी, एनी डिफिकल्टी बेटा? चलो बोलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, थैंक यू। चलो जल्दी से बोल दो फटाफट। एनी डिफिकल्टी? इजी छे? यस, कीर्ति थी, तनीषा थी, भूमिका, नितिन, देबार्जुन था, हरिनिशा, बरकतुल्ला जी थे, जिया पटेल थी, राजू कुमार ने भी शो किया। ये पी एंड एल बता दो। नितिन शुक्ला बोल रहा है मैं भी था सर, एंड पूजा बेन भट्ट बोल रही है इजी छे सर। बेटा डू प्रॉपर प्रैक्टिस, टेस्ट टेस्ट करके देखो, टाइम लगा के देखो, एंड इन 2 days रिवाइज योर प्रीवियस चैप्टर्स और रिवाइज योर प्रीवियस चैप्टर्स। ओके, सो थैंक यू। शुभम यादव बोल रहा है आप होते तो कोई डिफिकल्टी होती ही नहीं है सर। सिंह राजू कुमार भी बोल रहा है नो डिफिकल्टी सर, ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर। कीर्ति बोल रही है वेरी गुड बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल। और हम लोग मिलेंगे न्यू चैप्टर लेके डिपार्टमेंटल अकाउंट्स मंडे को, फुल एनर्जी से आना। ओके, टिल दैट प्लीज प्लीज डू ऑल रिविजन्स। ओके, 5 days में पूरी रिविजन्स कीजिए, 2 days में पूरी रिविजन कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, क्लोज कर दीजिए सेशन।